Hello students, welcome to NV Commerce Academy. Our today's topic is traditional theory of cost in which all the cost curves are U-shaped. So we will divide our cost in two parts, that is cost in short run and cost in long run. First of all, cost in short run. I hope all the students are aware with the concept of short run. Short run is a time period where we combine some variable units along with the fixed units in order to produce the product. So in short run, some units are fixed whereas some units are variable that we use for the production. So in the short run, our cost is divided in three parts. Three concepts we will discuss in the short run. First is total cost, second is average cost, and third one is marginal cost. In total cost, we will discuss two parts, that is total fixed cost and total variable cost. Same in case of average cost, we will discuss two parts, average fixed cost and average variable cost. So for studying the cost in the short run, we are going to discuss these concepts: total cost, average cost and marginal. Our first concept is total cost. Total cost is the cost incurred for production of the goods. So total cost that we incur for all the resources we employ for production is known as total cost. So our total cost is comprised of two type of cost: total fixed cost and total variable cost, because we combine fixed and variable factors for our production. So our concept is total fixed cost. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो इंकर होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर इसे बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी कंपनी की वो कॉस्ट होती है जो एक तरह से अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है. सपोज एक कंपनी है जो एक दिन में 10 ब्लैंकेट्स प्रिपेयर करती है और उस कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 800 रुपीज़ है. राइट नाउ अगर नेक्स्ट डे वो कंपनी 0 ब्लैंकेट प्रोड्यूस करती है, मीन्स वो कोई प्रोडक्शन नहीं करती, तो भी ये 800 उसे इनकर करने पड़ेंगे. अगर वो 5 ब्लैंकेट प्रोड्यूस करती है तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट 800 ही रहेगी. यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट एक कंपनी इनकर करेगी ही करेगी, जो अनअवॉइडेबल नेचर की होगी, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है. अब फिक्स्ड कॉस्ट किन किन चीज़ों को कंप्राइज करके बनती है? फिक्स्ड कॉस्ट में जनरली आपकी फैक्ट्री का रेंट इंक्लूडेड होता है, आपकी कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, आपके स्टाफ की सैलरी होती है, उसके अलावा डेप्रीसिएशन इसका पार्ट होता है. मीन्स जो ऐसे खर्चे जिन्हें आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, इस कॉस्टिंग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. इसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं. एक टेबल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं. सपोज our output is 0, 1, 2, 3, 4 and 5, and our fixed cost is 10, which would remain constant irrespective of the level of production. So what would be shape of total fixed cost? Total fixed cost curve will be parallel to x-axis whether you are producing 1 unit or 5 unit, or you are producing not even a single unit. A company has to incur that fixed cost. Moving towards the total variable cost,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर इनकर करते हो, यानी कि आपकी जो ये कॉस्ट है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट जनरली इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन योर रॉ मटेरियल, बिकॉज अगर आप कम प्रोडक्ट बना रहे हो तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, अगर आप अपनी प्रोडक्शन को एनहांस करोगे तो आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा अगर आप वेजेस की बात करो तो वेजेस भी क्या होती हैं आपके लिए, वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। नंबर ऑफ लेबरर्स ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर प्रोडक्शन कम है तो आप कम लेबरर्स को अपॉइंट करोगे। सेम विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक वेरिएबल काइंड का आपका खर्चा होता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द टेबल, again I am taking here the output and variable cost. If company is producing nothing, if your output is 0, then variable cost would also be 0. If you are producing 1 unit, you are incurring 10 rupees cost. If you increase your production to 2, your variable cost reaches 18. Same as it will continue to increase but at decreasing rate. So now we will plot the diagram of variable cost. In case of variable cost, your cost curve will start from the origin, which means at 0 level of production, your cost will be 0. This is the shape of variable cost. अगर आप इनके बीच का डिफरेंस चेक करोगे तो ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, राइट? और उसके बाद ये कांस्टेंट भी हुआ, गैप 4 का रह गया, और उसके बाद ये इंक्रीज होने लगा। सो ये पहले इंक्रीज हुआ एट डिक्रीजिंग रेट, देन कांस्टेंट रेट, एंड आफ्टर अ व्हाइल एट इंक्रीजिंग rate. This is the shape of variable cost according to traditional theory of cost. Now the concept of total cost. First, we will again begin with the table output with total fixed cost, total variable cost, and resultantly total cost. 0, 1, 2, 3. We will take our output up to 8 units. Total fixed cost would remain same, that is 10 as we took earlier. Total variable cost भी हम यहाँ पे repeat कर देंगे. At 0 level of production it would be 0, 1 पे 10, then 18, 24, 28, 32, 38, 46 and 62. Now we will add both of these for the total cost, and here I am taking the data 28, this is our total cost. Diagrammatically, it is very easy to understand what is the concept of total cost. As you all know, your total fixed cost is a curve which is parallel to your x-axis, which is 10. Your variable cost is a curve showing the slope, first of all at decreasing rate, then constant, and then sharply increasing rate. It is total variable cost. So what would be your total cost? Your total cost would be sum of all these two curves. So it would be parallel to total variable cost, but on the left side. Above the total variable cost, your total cost curve will
लाई। जो टोटल कॉस्ट कर्व होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के अपर साइड पर लाई करेगा. So this is concept of total cost according to traditional. Average cost. Average cost is cost per unit of output. अगर आप अपनी total cost को divide कर दोगे by output, you will get average cost. As we discussed two concepts of total cost, same as our average cost would be divided into two parts, average fixed cost and average variable cost. So here we are beginning with average fixed cost. Average fixed cost would be obtained अगर हम अपनी total fixed cost को अपनी output यानी quantity से divide कर दें तो हमें average fixed cost जो है वो obtain हो जाएगी. अगर हम इसी चीज़ को एक टेबल और एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. सो आउटपुट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ वेरी इजी. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल फिक्स रहती है विद इंक्रीज इन आउटपुट. सो आप यहाँ पे अपना आउटपुट क्वांटम ले लीजिए. Total fixed cost would be same, that is 10. You have to divide with the output. So 10 by 1, 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.7, 1.4, 1.25. So what we can notice from this data that it is declining. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है. सो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होगी. दैट वुड बी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. इट हैज़ टेंडेंसी टू टच द एक्स एक्सिस बट इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. इट कैरीज द शेप ऑफ rectangular hyperbola. Same as we will cover the concept of average variable cost which will be obtained by dividing total variable cost output. So with the help of a table, take your output and your total variable cost which was 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 and 62. Now average variable cost 10 by 1 10, 18 को 2 से divide 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6, 7.8. Now first of all it declines but after a while it inclines. So अगर आप rate of increase और decrease देखें तो उसमें भी variation है. concept को clear कर लेंगे with the help of a diagram. Average variable cost curves first of all declines but after a point it starts increasing at increasing rate as well. So this is shape of average variable cost. So what would be the average cost curve? By comprising average fixed cost and average variable cost, average cost curve takes U shape. This is the shape of average cost curve. Why? As your average fixed cost declines, to average variable cost declines but rises sharply. By comprising all these two, it takes a perfect U shape shown in the diagram. So here a question arises that why it is a U-shaped curve. जनरली आपसे शॉर्ट आंसर्स में या आपके क्वेश्चन में ही
एक सेकेंडरी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन कर लिया जाता है दैट वाई एवरेज कॉस्ट कर्व्स इज यू शेप। अब ये कॉस्ट कर्व दो रीजंस की वजह से यू शेप होता है। फर्स्ट, एज आई क्लियर्ड, बिकॉज ऑफ interaction of average fixed cost and average variable cost। एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की नेचर ऐसी है, वो डिक्लाइन होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वो डिक्लाइन होता रहता है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है। इन दोनों का जो इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है ये आपस में सेट ऑफ हो जाता है एंड इट टेक्स अ perfect U shape। So by interaction of average fixed cost and average variable cost आपका average cost curve U shape कैरी करता है। एंड इसका दूसरा जो रीज़न है वो क्या है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportions। I hope all the students are aware about the concept of law of variable proportions, which explains that with increase in production, first of all, cost declines. After that, it reaches to the minimum point, but then it again rises. So, because of law of decreasing return, increasing return, constant returns, it carries the shape of U. Moving towards the next concept, that is marginal cost. Marginal cost is additional cost per unit. So if we increase our production by 1 unit, what change would be there in our total cost? Marginal cost को calculate करते हैं change in total cost divided by change in quantity, right? It can also be calculated total cost of n term minus total cost n minus 1 टर्म। इस कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ। सपोज एक कंपनी में 10 प्रोडक्ट 50 रुपीज़ के बन जाते हैं। अगर 11th प्रोडक्ट बनाया जाता है तो टोटल कॉस्ट 54 हो जाती है। अगर पहले वाले फॉर्मूला में इसे फिट करें तो चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या है? 4। चेंज इन क्वांटिटी क्या है? 1। सो मार्जिनल कॉस्ट 4। टोटल कॉस्ट ऑफ nth टर्म 54, दैट इज 11, एंड of 10 units it is 50, so it is 4। marginal cost is difference between the total cost due to one additional unit's production। with the help of diagram and table this concept would be more clear। so output, we are taking total cost as we discussed earlier, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56 and 72। Now if we have to calculate marginal cost, so here is our data, that total cost जो हमने पहले भी की थी। सो आर मार्जिनल कॉस्ट हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट प्लेस पे ब्लैंक, 1 एडिशनल यूनिट, एक यूनिट 20 रुपीज़ में बनती है, 2 यूनिट 28 में। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई? 8। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 28 माइनस 20, सेम एज 34 माइनस 38, 38 माइनस 34। So first of all it is decreasing at decreasing rate, then it turns 0 and after a while it starts increasing। so what would be shape of marginal cost? As I mentioned earlier, in traditional theory all the short run cost curves generally carry U shape। so your marginal cost is also U shape। So our next topic is relation between average cost and marginal cost। We have covered concept of all the cost curves that are in short run। So here we are linking the topic relation between average cost and marginal cost। आपने अभी पढ़ा दैट एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होती है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर मुझे एक ही ग्राफ में इन दोनों को प्लॉट करना हो तो मुझे ये कैसे प्लॉट करने हैं? सी, it would be shape of our average cost,
and it would be shape of our marginal cost. So where they coincide, that is the point of equilibrium optimum output. So यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होती है? सबसे पहली बात, जब आपका AC फॉल करता है, एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता है. फिर जब आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करता है, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, बट मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से क्या होगा? ज़्यादा होगा. एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करता है एवरेज कॉस्ट को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट. जब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होती है तब मार्जिनल कॉस्ट इसको कोइंसाइड करती है. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. अगर आपके पास ये क्वेश्चन थोड़े हायर मार्क्स में आता है तो यू कैन add table into this. You know all the concept of table now. मैंने आपको टेबल कंस्ट्रक्शन बता दी है तो आप बहुत इजीली उस चीज़ को कर सकते हो. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. आप इन सारे कॉन्सेप्ट को एक ही टेबल में शो करके या मेनली एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को टेबल में ले करके उसके बाद ये डायग्राम बना के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाएंगे. Our next topic is cost in long run. We will discuss all the cost, that is total cost, marginal cost, average cost in the long run now. So what is long run? Long run is a time period where all the factors of production are variable. There is enough time to adjust the production. You can arrange new plant as well as there is enough time for your plant production. So our first curve is total cost, which is in long run. So we will call it as LTC, long run total cost. So long run total cost of production होती क्या है? long run total cost कर्व जो है वो आपके शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स को सम अप करके बनता है. यानी कि आपके जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स थे उनके मिनिमम पॉइंट्स को, इसमें जो आपकी कॉस्ट रहती है वो लीस्ट रहती है, मिनिमम रहती है, उनके मिनिमम पॉइंट्स को कवर करके आपका लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व बनता है. सो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन में कैसा होता था? वो वाई एक्सिस के एक पॉइंट से स्टार्ट होता था बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. सो it was the shape of short run total cost curve. I am taking it as short run total cost curve 1. Same as आपका next short run total cost curve could be this. So this is the minimum point and this is the minimum point of these short run total cost curve. So आपका जो long run total cost curve होगा वो इन minimum points को टच करके बनेगा लाइक दिस. दिस इज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व. सो आपका ये जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व है मैं इंडिविजुअली आपको बना के दिखा देती हूँ. ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये अपने स्लोप को भी एडजस्ट करता है, चेंज करता है, सेम एज शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व. सो हियर आई एम काउंटिंग द फीचर्स. फर्स्टली it begins from origin, which means if you are producing nothing, you can keep your cost zero, which was not possible in the case of short run. It has a positive slope. With increase in production, your total cost will increase, which is very clear that it costs always more to produce more. And the last and main feature of long run total cost curve is it first of all increases but at
decreasing rate. After a while, it remains constant, and after that, it again increases but at increasing rate. इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है. पहले ये इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पर, फिर कांस्टेंट रेट पर, बट आफ्टर दैट ये एक इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है. आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट जनरली कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस more. So this is the concept of long run total cost curve. Now long run average cost curve. Long run average cost curve is the curve with minimum average cost of production. Long run में आप अपनी cost of production को minimum choose कर सकते हो. With the help of this diagram, there is always selection of plants available in the long run. Suppose a company is having 2 plants. Suppose this is the short run average cost curve of first plant and this is the short run average cost curve of second plant. Now, if we have to produce this level of output, say OM, if I have to produce OM units and if I am producing this on second plant, so I have to cost more, right? But if I have to make more production, say ON products, and if I am producing it at plant 1, again it will cost more. So in long run, we can select the plant according to the plant capacity and according to our desired level of production. So long run average cost curve is sort of envelope which touches the minimum points of short run average cost curve and is more flat. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के सबसे मिनिमम पॉइंट्स को मैच करके ये कर्व बनता है और शेप में ये ज़्यादा फ्लैट होता है. If company is having multiple plants, then suppose 5 plants are there in a company. This would be the shape of short run average cost with minimum points like this. So your long run average cost curve will touch all these minimum points and will be like a flat bowl carrying slope like this. That would be the optimum production here. Long run average cost curve is also known as envelope curve and planning curve. Long run marginal cost curve. Long run marginal cost curve is again a curve showing change in marginal cost due to additional production of one more or one less unit of a commodity. So long run marginal cost curve carries U shape with relatively flat slope in comparison to the short run. So long run marginal cost curve carries U shape. Now I am concluding the topic relation between short run average cost, short run marginal cost, long run average cost, long run marginal cost. यानी कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करना हो तो कोई भी कंपनी उस पॉइंट को किस तरीके से ऑब्टेन करती है. Long run average cost curve is a flat curve like this and short run average cost curve is a perfect U-shaped curve like this. If we plot long run marginal cost, it is sort of flat like this, but short run marginal cost curve actual U shape carry करता है like this. So this is
our optimum output, and point of equilibrium will be